Okay, so we just start. Okay, so we just start our session. So firstly, we just clear the concept of data analyst. Okay, the fundamentals of data analyst. Okay, so what do you mean by data analyst? Any idea? Yes. Any concept maybe heard about data analyst? Something. Anyone? Anyone can answer. Yes. Okay. So let me explain you. So actually it is the process, okay, it is the process of examining the raw data to uncover the hidden parts, pattern, generate the insight. Okay, that means we can convert a. Can you just mute your mic? So it generally convert the complex information into the main approaches. Okay. And main importantly means we must be understand about the data. What do you mean by data? Data is the collection of information. It can be like any numbers, it can be name, it can be qualitative or quantitative. Okay, two types of data, qualitative and quantitative. You can see here the names, smell, colors, and in quantitative data, shoe size, weight of students, height of students, that are different. Okay. So what is the data? It can be in the quantities, it can be in the any kind of informations, graphs, maps, measurement, observation, facts, या number. Okay? So you must be understand what is meant by data first, then data analytics. Okay? So now we will see the data analytics part. So data actually it can be in the like data can be the raw data. Raw data means that is can be in the hidden parts and it is like complex data. We can't understand the data actually. And data analytics means it is the like it can be convert that complex data into the actionable and strategic way. Okay. You can see here the data analytics is the process of examining the data sets in order to draw conclusion about the information it contains. Kindly please note it because I will ask these questions. Okay, please note it down. You must be know about what is meant by data and then what is meant by data analytics. Please note down.
What do you mean by data analytics? Please note down. Hopefully you understand this concept. Any idea what is meant by collection? Yes, anyone? What is meant by Data is a collection? Yes. Yes, Pranjali. Data collection means what? Data collection. homogeneous collection of data. I'm just asking that what is meant by data collection? You are maybe saying that the type of data. I just want to know what is meant by data collection. Actually, it is the core analytics process. Okay, data collection, then data cleaning, then analyzing, then visualization. These are the four process. Yes, Prishita Bagde. Hello. Hello, ma'am. Hello. Sapita. Okay, old students are also joined here. No, ma'am. Actually, I'm only joining. Okay. Yeah, Sapita is also joining here. I think Sapita Chavan. Yeah. Okay, Prishita, may I know what is meant by collection? Data collection is. Sorry, ma'am. I'm just currently joining, so I don't have any idea Oh, what you are just telling. okay. So collection is same concept. Okay, gathering data. Okay, gathering raw data from apps, yeah, from any other sources like website, from any other things. Okay, that is called as data collection. These are the process actually. What are the process of data analytics? Four processes are there: collection, data collection, okay, data cleaning. I just type here over here, data cleaning, okay, then data analyzing, can just say analyzing process, okay, analyzing, and then visualization. These are the steps, these are the process, okay, of data analyzation. Firstly, we will collect that data from any sources. Sources means, for example, we can collect from apps, we can collect data from Excel, MS Excel, okay. We can collect data from websites, anything, okay. Then after that, gathering that data, okay, we just clean that data first, that we will remove that duplicates, okay. How we can handle, how we can missing that missing values, how we can do that things, we can, how we can fix that errors, that we will see, okay. The next thing is analyzing. What is meant by analyzing? Using the statistical models and with different trends, with different tools, we can do that analyzing process, okay. And lastly, a visualization. Visualization means creating dashboards, charts to make that data easy to understand. That is called as data visualization. Understand what is meant by data visualization is? Data visualization means creating dashboards, okay. We will see what is meant by dashboards, so don't panic here, okay. We will just see it step one by one, so it will be easy for you, okay. Hopefully you understand what is meant by data analytics. Yeah, okay, I'm not sharing any screen, I'm just telling this thing.
Now I'm screening. Yeah. So primary focus areas for analytics. Understand the customer behavior. These are the areas for the data analytics. Firstly, we understand the customer behaviors. What is the behavior of customers? Okay. Then understand the product uses. These are the step by step. Okay. Then third is business model innovation. Then lastly is increase the operational efficiency. Okay. We must be know about the customer behavior. According to that, we will take an action. Okay. Then the product uses. Okay. Then we will create that model for the innovation purpose. Then with the help of that innovation, we will increase that operational efficiency. Okay. So these are the difference between the data science and data analytics. You can see here. These are the same kind of things. Okay. So in data science, a field that uses scientific methods and algorithm to extract knowledge, okay, and insight from the structured and unstructured data. And in data analytics, the act of inspecting data sets to infer the conclusion from the information using specialized systems and software. It focuses on specific areas with a specific goal. Okay. Please note down. I will ask this question. It generally data science. It generally focus on algorithms. Okay, it just predict the future, and it requires a coding as well. But in data analytics, it just focuses on like current decision, current information. Okay, so these are the main difference. So you must be know about these questions because maybe it will be asked in your interview questions. What is meant by data science and data analytics? You must be know this concept. And in data science generally it uses the like machine learning models. Okay, it may be used the like pipelines and artificial intelligence as well. And in data analytics we use like different tools like SQL, then Python, then MS Excel. Okay, Power BI. These are the tools. And in data science actually it requires maths. You can just see here math, statistics. Okay, machine learning. And in data analytics it requires data visualization. Okay, just Excel and SQL, Tableau, Power BI, that used to like help to build the dashboards. So these are the differences. You must be know this concept. If you have any doubts, please let me know. Okay. Understand what is meant by data science and data analytics? Yes?
या सपिता, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझे ये कंसेप्ट? डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या है, डेटा साइंस मतलब क्या है? यस. ओके. I just want interactive session. ओके. थोड़ा इंटरेक्टिव रहा तो आपको कंसेप्ट भी समझेंगे. इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट. डेटा मैंने बता दिया है, व्हाट इज मीन बाय डेटा. ओके. डेटा, इट कैन बी लाइक एनी इंफॉर्मेशन. इट कैन बी इन द ग्राफ, इट कैन बी इन द like colors, it can be in the name, it can be in the sizes, facts, number, observation, okay, quantities, all things. Two types of data, qualitative and quantitative. Please note down. So what is the importance of data analytics? So actually data analytics is used in many fields. Okay, like it can be in banking, it can be in the farming, it can be in the shopping, governments, and many more. Okay, that is why it is very important. So what is the importance of data analytics is actually it helps in decision making. डिसीजन लेने के लिए बहुत यूजफुल है. ओके, फर्स्ट थिंग. देन सेकंड थिंग इज हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, थर्ड थिंग इज हेल्प्स इन लाइक आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? एक्चुअली इट जस्ट क्लियर द फैक्ट्स एंड पैटर्न फ्रॉम डेटा. कोई भी डेटा रहे, कोई भी डेटा रॉ डेटा रहे. ओके, रॉ डेटा मीन्स जो विदाउट क्लीनिंग, बहुत सारे जिसमें डुप्लीकेट्स है, जो रॉ डेटा है. ओके, सो डैट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा. रॉ डेटा मीन्स उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भरे हुए हैं. सो डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? हमें उससे क्लियर करना है. वी हैव टू क्लियर दैट डेटा. ओके, so with the help of that cleaning process, it can be helpful for like which helps people to like we can take any smart decision for that. Okay, then problem solving मतलब क्या हो सकता है? जैसे अगर बहुत सारा डेटा है, हमें उस डेटा को बहुत ही कलेक्शन वे में फॉर्म किया है. ठीक है, सो इस वे से क्या होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो फिक्स करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये धीरे धीरे समझेंगे. आई नो थोड़ा सा एक्टिक सेशन रहेगा पहला, बिकॉज कैसे थोड़ा फंडामेंटल्स आपको क्लियर करना होगा कि डेटा एनालिटिक्स में आप क्या पढ़ने वाले. ठीक है, इसीलिए मैं जस्ट गो थ्रू कर रही हूँ हर एक कंसेप्ट कि शायद आपके कान से थोड़ा जाए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो ये प्रोसेस होती है, लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल. यू कैन जस्ट ड्रॉ इट. प्लीज नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए. ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, then understanding data, understanding the data,
Understanding the data means we can say the data collection. We can collect data from any sources like Excel. We can just collect that data. अंडरस्टैंड किया, सबसे पहले हमने डेटा लिया है वहाँ से, कोई भी सोर्स से. उसके बाद डेटा प्रिपरेशन. डेटा प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा को क्लीन किया है. वी विल यूज़ वेरियस टूल्स ओके फॉर दैट प्रोसेस. जस्ट गो थ्रू करिए. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, देन अंडरस्टैंड द डेटा, then data cleaning and transformation, then data enhancement, okay, handling that missing values and all things we will do. We will see that process, so don't worry, okay. Then data analytics. Data analytics means using tools like Python, SQL means SQL, okay, SQL, Excel. With the help of this, we will find out the patterns, okay, then extract the meaningful insight. Got it? Please note down. Please note down. Data analytics process. Okay. First is data collection. Okay. Then data preparation. Then data analysis. Then data visualization. These are the process, okay. So in that, so basically this life cycle follows. Understanding the data, data cleaning and transformation, data enhancement, data analytics and data visualization. Please note down. Done? So, types of analytics, okay. Descriptive analytics, predictive analysis, prescriptive analytics, and one more is actually diagnostic analysis, okay. Descriptive analysis means what? This is descriptive analytics, okay. Descriptive analysis means actually it helps to summarize and understand the past data, okay. Descriptive data analytics, it is the third step. First we will see prescriptive, okay. Prescriptive means it helps to choose the best action or solution, okay. The best action and solution means it enables the smart decision, okay, based on the data. What should we do? This is called as prescriptive analysis. This is the first step. Okay. Then later predictive analysis. Predictive analysis means used to guess what happen in the future. It predicts in the future based on the historical pattern, okay. Means it looks at the current and past data to find the patterns and make the forecast decision.
And then descriptive analysis means it helps and summarize, understand the past data, present, future, past. What should we do? What could happen and what has happened? Okay, please note it down. And one more is remaining actually, diagnostic data analysis. The fourth one. The diagnostic data analytics means looks at why something happened in the past, and it may be relate like tools like correlation, regression, comparison, that is called as diagnostic data analytics. This is the fourth type. Please note down. First is prescriptive, second is predictive, third is prescriptive, okay, and fourth is diagnostic. Done. You can see here the example, descriptive analytics. How does Netflix frequently recommend just the right movie? It is the example of that thing. And in predictive, it like understanding the future. Okay. मैम वो लेफ्ट नोट होने का है मैम. Okay. So four types of analytics. Okay. Prescriptive, second is predictive, third is descriptive, fourth is diagnostic. Diagnostic is also involved here, okay? Just miss here. You can just add fourth thing is Okay मैम. Okay. okay. Thank you. So these are the example: descriptive analytics, then predictive analytics, understanding the future, then prescriptive analytics, advice on the possible outcomes. You can just note down here. If it is done, please let me know. हेलो मैम, इसे भी नोट करना है क्या? हाँ, इसे नोट कर दीजिए. ठीक है डिस्क्रिप्टिव ठीक है का मैम. एग्जाम्पल. Done. नो मैम.
Okay, ma'am. Okay. So, tell me one question. What is meant by data analytics? Yes, anyone can answer. Okay. What is meant by data analytics? Yeah. What is meant by data analytics? Shweta, Pranjali, Karishma, yes. Uh, I know you just can do Google and you can just copy paste over here, right? I just want the answer, not the message. You can just unmute your mic and just say this answer, please. What is meant by data analytics? Anyone? Uh, the systematic process of collecting, cleaning, transforming, and modeling raw data. Hidden part, draw conclusion, and support informed making. So you understand that concept? Yeah, just read that things. समझाइए क्या होता है डेटा एनालिटिक्स मतलब. मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ रहे हो फरहान. कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए. तो मुझे सही में बताइए कि डेटा एनालिटिक्स आपको समझा, एटलीस्ट वो डेफिनेशन समझी या बस आप पढ़ के बता रहे हो. क्लियर है, क्लियर है। Okay. So, what are the process of that data analytics? Yes, cycle of that data analytics. Yes, लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स क्या है, प्रोसेस क्या है डेटा एनालिटिक्स की. स्टेप्स क्या है डेटा एनालिटिक्स की. यस सपिता. यस प्रेषिता बताइए. Firstly, we collect the raw data and then we transform it. ओके. I mean, transform the raw data. Then we
ट्रांसफॉर्म के बाद उसके देन एनालाइज द डेटा एंड देन विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा. गुड. गुड गौरव. And actually, growth of data versus growth of data analytics. Okay, you can see here. अभी नाउअडेज डेटा एनालिटिक्स के जॉब आप सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन में हो या naukri.com में हो या इंडीड में हो. ठीक, कोई भी पोर्टल्स में आप देख सकते हो. ठीक है, बहुत ही उसका जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, ग्रोथ बढ़ रही है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़. सो आप अगर इसके कंसेप्ट आपके क्लियर रहते हैं, ठीक है, तो अभी भी आप सर्च करोगे लिंक्डइन में कि डेटा एनालिटिक्स के जॉब, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे. ओके, सो आपको टूल्स जो है वो उसके कंसेप्ट आपको क्लियर करना है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट, रट्टा नहीं मारना है. ओके, और अगर कहीं भी आप स्टक होते हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई जस्ट वन इंटरेक्टिव सेशन यू. कुछ नहीं समझ में आता आप बोल सकते हो. आप सैलरी पैकेज भी देख पा रहे हो. सो इस तरह से डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड फॉर डेटा एनालिटिक्स डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज एज अ डेटा एनालिटिक्स आपको डेटा के साथ ही गेमिंग करनी है, समझ लीजिए. ठीक है, डेटा के साथ ही आपको खेलना है. एंड और डेटा टू टाइप्स के होते, लाइक स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब कैन बी डिस्प्लेड इन रोज, कॉलम्स एंड रिलेशनल डेटाबेस. फॉर एग्जांपल एक्सेल. ठीक है, एक्सेल एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, सो जो कि रोज एंड कॉलम्स बेस्ड रहते हैं, राइट. एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन रोज, कॉलम्स एंड रिलेशनल डेटाबेस. फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज है, वो भी डेटा ही है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट इन लाइक रो एंड डेटा, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट. ओके, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. इट कैन बी लाइक इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, एनीथिंग, मेल, स्प्रेडशीट्स, फाइल्स. ओके, दिस आर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या है? नंबर्स, डेट्स, स्ट्रिंग्स. ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. ये डिफरेंस आप नोट डाउन कीजिए. इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज. ठीक है, कम जगह लगती है एज कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिक्वायर्स मोर स्टोरेज. ओके, note down please. And it easier to manage and protect with the legacy solutions, and it is very hard to do that.
Note these differences: structured and unstructured data. Done? So understand what is meant by structured data and unstructured data. And structured data is highly organized. Okay, it is in the organized way. And unstructured data stored in its like raw data. Okay, raw native format. Done? Any example of structured data? Yes. जो डे टू डे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा का? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं. यस, एनीवन? स्ट्रक्चर डेटा का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कोई दे सकता है? Guys, I'm asking some question. Any example of structured and unstructured data that can be related to real world? मैम रोल नंबर लिस्ट. Roll number. Okay. Yeah, as a structured data. Good. Like phone number. मैम emails unstructured data. No. It is not like that. Structured data means, for example, it can be your roll number. Okay. It can be phone numbers, addresses, रिजर्वेशन टिकट, एयरलाइन या ट्रेन टिकट रिजर्वेशंस. ओके, मैम पीडीएफ डॉक्यूमेंट. वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा. यस मैम, आई एम सेइंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, ठीक है. सो दिस आर द एग्जाम्पल: मेल, ईमेल, पीडीएफ, यूट्यूब वीडियोस. दिस आर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. Hopefully you understand this concept. So why data analytics? Actually it used in like Facebook, it used in Amazon, Uber, Bank of America,
then Airbnb, Spotify for various purposes, Facebook for like social analytics, Amazon improving that e-commerce experiences, Uber for optimizing rides, okay, Bank of America for increasing the customers experiences, Airbnb for improving the searches, Spotify for the music recommendation. So these are the data analytics. These are the importance of data analytics. Please note down here. Please note down why data analytics is used. And like data analytics can be used in any field, okay, any kind of field means like in it can be used in healthcare, it can be used in banking and finance, it can be used in retail and e-commerce, you can say it can be used in sports and entertainment purpose, okay, for various reasons. For example, for the finance and banking, why we are using data analytics? Any example? Yes, anyone? In finance and banking, why we will use this data analytics? Yes, फाइनेंस और बैंकिंग में हम डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस फील्ड में क्यों यूज़फुल हो सकता है डेटा एनालिटिक्स? To organize data in table format. Table format, so that is possible with the help of Excel, na? That is not the main answer actually. To organize in the table format, we can use that thing with the help of Fraud, Excel. fraud detection. Hmm. Yes. बजटिंग और forecasting में यूज कर सकते हैं. For fraud detection purpose, for risk management. कस्टमर एनालिसिस. Yes. Okay. फ्रॉड डिटेक्शन मतलब क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन के वक्त जो फ्रॉड होता है. यस. सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. और अगर रिटेल और ई कॉमर्स के लिए हम क्यों यूज़ करेंगे डेटा एनालिटिक्स? रिटेल ई कॉमर्स, रिटेल मतलब आई होपफुली सबको समझ में आ रहा है रिटेल मतलब क्या है. रिटेल एंड ई कॉमर्स में कैसे यूज़फुल कर सकते हैं ये कंसेप्ट? ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक फ्रॉम द MSBT बैच ना, पॉलीटेक्निक. यस. प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए मैम. यस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए हो सकता है. गुड. और सेल्स के लिए, सेल्स फोरकास्टिंग के लिए. गुड. सो दिस आर द एग्जाम्पल. ओके. अच्छा मुझे बताइए, आप सब MSBT बैच से ही हो ना?
मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? मुझे उसके आंसर चाहिए एंड वो क्विक रहेंगे बिल्कुल। मैं पूछूंगी, मुझे जस्ट आपका हैंड आप रेज कर सकते हो, ठीक है? या आप मैसेज कर सकते हो, या फिर अनम्यूट करके आप मुझे उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है? टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स. What are the types of analytics? Predictive, okay, then prescriptive, good, descriptive, fourth, one more, yeah, diagnostic. One more is remaining actually. Diagnostic analysis is also there. Okay, good. So these are the four types of analytics. And what is data and types of data? Good, Vedant. What are the types of data? Rohan. Okay. Anyone? Rohan. I think you are from the old batch, no? Rohan Rajurkar? Yeah, Vedant is also maybe. Okay. Okay. So basically data is everywhere, okay? We just use it daily basis, whether it is like uh, they realize it or not. You maybe realize it or not, but we just deal with that data daily basis. So now third question is, why it is important?
Yes. Why it is important? What is the importance of data analytics? And yes, and how many companies use that data analytics? किस लिए डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, कैसे डिफरेंट कंपनीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक किस लिए यूज़ करती है, वो मुझे एग्जांपल्स चाहिए. Yeah, storing the data in the correct form, correct way. And it can be used in various industries. So how it is, please? कैसे यूज़ करते हैं हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, उसके एग्जांपल्स आप बता सकते हो. या एनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल. रियल वर्ल्ड एग्जांपल. Yes. कोई बता सकेगा लाइक कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हमने देखे ऑलरेडी. फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी में, ठीक है, इम्पोर्टेंट इज, कोई भी कंपनीज में इम्पोर्टेंट होता है सेल्स डेटा. ठीक है, सेल्स डेटा किस लिए, से विद द हेल्प ऑफ दैट सेल्स डेटा कंपनी का ग्रोथ या बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है, राइट. सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर डेटा एनालिटिक्स. हाउ, कैसे, क्योंकि वो जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके डेटा को करेक्ट फॉर्म में करेगा. ओके, पैटर्न क्रिएट करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट पैटर्न सेल्स टीम को बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, to do that things. So these are the example. For example, at any Coursera, yeah, you can say an academy, like various courses are there, right? So उसमें क्या होगा कि उनको डेटा के रिक्वायरमेंट रहेगी कि कौन से स्टूडेंट्स से एनरोलमेंट किया है, ठीक है. सो डेटा की रिक्वायरमेंट कैसे हम कलेक्ट कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स पर्पस. या मंथली एक्सपेंस ट्रैकिंग, सैलरी लेजर, गुड. सो दिस आर द एग्जाम्पल. ओके. Okay. In Google, yes. Nowadays, actually, as a data analytics professional, okay, it is like in a high demand, okay, across various industries.
It can be including finance, it can be including healthcare, marketing, retail, whatever. Okay, so main important is you have to clear the concept first. Okay, skill is important for that profession. And without any degree we can do this data analytics course as well. You don't require any degree for this. Okay, important is skill. Done. Hopefully you understand all concept. If you have any doubts or question, you can ask your question please. Then we will end our session. Okay, and from tomorrow I will take an attendance as well. Okay, yes, any questions? So today how many students are joined? 16, 15 students. Okay, okay, thank you guys, thank you so much. We will just conclude our session. Yes, Prishita. आज से अटेंडेंस लो करके क्या? जो आज सर है ना गुणवंत सर उनका ऐसा मैसेज है आपको कि आज से ही आप अटेंडेंस लो मतलब जितने लोग हैं उनके नाम वगैरह ले लो ऐसा ओके, मैं नोट डाउन कर लेती बिकॉज आई डोंट सेंड मी दी रिकॉर्ड. मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. ओके, actually sir said 40 students are there, but I see here only 15 students. सिर्फ 15 स्टूडेंट्स है. ओके, अंकिता ठाकरे. हाय नीलम मैम, हेलो. यस, एक्चुअली मैंने आपको शेयर किया था ना एक्सेल सीट अटेंडेंस का. शेयर किया दैट है. माइट बी हैविंग, हाँ ऑलरेडी है. मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना कि ऑलरेडी शेयर है करके आपको. तो आप अभी क्या करो, जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है इन दिस ग्रुप, आप उनका मैन्युअली अटेंडेंस ले लो. देन यू कैन अपडेट ऑन द एक्सेल सीट. ओके, ओके, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कल ही आपको शेयर किया था. also आपको मैसेज पे व्हाट्सएप पे किया था कि आप चेक कर लो कि गूगल क्लासरूम टाइम शीट एंड अटेंडेंस शीट ये दोनों ही आपको शेयर है. ओके, तो स्टूडेंट को वहाँ पे अभी नोट्स भी डाल दीजिए गूगल क्लासरूम में. हाँ, ठीक है. ठीक है, ओके.